Let's begin with the problem. The problem we have in front of us is what you have is you have a block of mass m moving with velocity v on a smooth horizontal surface. Mu equal to 0 mean there is no friction, right? क्योंकि surface smooth है तो ये block हमेशा v velocity के साथ ही चलता रहेगा, right? Easy to understand, right? When the block will reach here, what is going to happen? Block has got velocity v, right? And it starts compressing the spring. और जैसे जैसे ये स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा, आपको पता है हुक्स लॉ कहता है स्प्रिंग विल स्टार्ट एक्सर्टिंग अ रीस्टोरिंग फोर्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन, राइट? सो दिस इज अ रीस्टोरिंग फोर्स exerted by the spring on the block. So what will happen due to this force on the block? The velocity of the block will keep on decreasing, right? So इसकी velocity धीरे 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 जीरो होते होते finally it will become zero, right? जब block की velocity जीरो हो गई उसके बाद ये स्प्रिंग को फर्दर कंप्रेस नहीं कर पाएगा. Are you getting? So this is the condition at which the spring will be maximum compressed, right? So what is the condition for maximum compression? The condition is the block will have zero velocity. Are you getting? So question is find the maximum compression of the spring, right? आपको यही दिखाना है कि spring maximum कितना compress हुआ. Pretty easy. Let's begin with the problem. तो मान लीजिए स्प्रिंग की जो ओरिजिनल लेंथ थी वो इट वाज लाइक दिस वाज द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग. तो मान लेते हैं ब्लॉक ने कि इसको x कंप्रेस किया स्प्रिंग को. नाउ मोटिव इज टू फाइंड दिस x. स्प्रिंग कितना कंप्रेस हो गया, मैक्सिमम कंप्रेशन स्प्रिंग में कितना आया. ओके, हाउ टू अप्रोच दिस प्रॉब्लम? लेट्स गो वेरी सिस्टमैटिकली. दिस इज अ कोलिजन प्रॉब्लम. ये मास आया और इस स्प्रिंग के साथ कोलाइड किया. ओके, सो ड्यूरिंग कोलिजन प्रॉब्लम वी नो वी हैव वन मेथड इज कंजर्व लीनियर मोमेंटम, राइट? आप सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हो, बट इस प्रॉब्लम के अंदर ये वर्क नहीं करेगा. क्यों नहीं करेगा? गिवन है कि जो स्प्रिंग है ये मासलेस है. इट्स अ वेरी वेरी मास लाइट स्प्रिंग, राइट? तो अगर ये मासलेस है तो इसका मोमेंटम क्या लोगे? क्योंकि सिस्टम तो ये मिला के ही बनेगा. इसके अकेले का तो मोमेंटम कंजर्व नहीं कर सकते. क्यों कंजर्व नहीं कर सकते? क्योंकि ये जब स्प्रिंग के साथ कोलाइड करेगा तो स्प्रिंग इसको एक डेफिनेटली इधर फोर्स लगाने वाला है, राइट? जब सो दिस इज द एक्सटर्नल फोर्स फॉर दिस मास. सिंस देयर इज एक्सटर्नल फोर्स तो लीनियर मोमेंटम ऑब्वियसली इस मास का तो कंजर्व बिल्कुल भी नहीं है, राइट? तो सिस्टम का आप कर नहीं पाओगे क्योंकि ये जो स्प्रिंग है ये मासलेस है, तो आप स्प्रिंग का मोमेंटम आप फाइंड नहीं कर पाओगे. नेक्स्ट, कैन आई यूज मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन? आई नीड टू चेक. फॉर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस शुड बी डूइंग वर्क ऑन द सिस्टम. ओके, लेट्स चेक. सो कौन कौन सी फोर्सेज हैं इस सिस्टम, पूरे सिस्टम के ऊपर? एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स, कंजर्वेटिव, नो प्रॉब्लम. फ्रिक्शन है नहीं, दैट मीन्स यहाँ पे एक फ्रिक्शन हो सकती थी नॉन कंजर्वेटिव, वो बिल्कुल भी नहीं है. ओके, जब ये मास इसके ऊपर स्ट्राइक करेगा तो जो स्प्रिंग जो फोर्स लगाएगा मास पे दैट इज अगेन कंजर्वेटिव, राइट? सो ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेज आर वर्किंग ऑन द सिस्टम, सो यू कैन यूज मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन. लेट्स ट्राई टू यूज मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन. So this is your initial situation. This is your final situation. So using mechanical energy conservation between initial and final problem. So using mechanical energy conservation between your initial and final stage, mechanical energy initially should be equal to mechanical energy finally. Pretty easy. So let's start. So mechanical energy initial condition, half mv square. There is no kinetic energy with the spring, it is at rest, plus potential energy. Gravitational potential energy तो नहीं चेंज होगी, राइट? ये पूरा का पूरा सिस्टम ग्राउंड के ऊपर है, राइट? हियर आई विल टॉक अबाउट इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. क्यों? जब स्प्रिंग कंप्रेस होगा तो यहाँ पे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में चेंज नहीं आएगा. सो लेट्स टॉक अबाउट इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. व्हाट इज द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली? Spring is uncompressed, so there is no elastic potential energy. So kinetic energy plus potential energy initially, initial velocity, equal to mechanical energy finally with the system, right? With the system. So half m velocity with the block is 0. Kinetic energy with the spring again 0. क्यों? It is massless. अगर massless है, mass ही नहीं है, तो kinetic energy कहाँ से आएगा? Again 0, right? Potential energy, yes, there is potential energy with the spring because it is compressed, half k x square. What is x? Compression in the spring that you need to find. Compression in the spring. So this is mechanical energy
initially, this is mechanical energy finally. सिस्टम का प्लीज कॉन्सेंट्रेट, हम किसका मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर रहे हैं? वी आर कंजर्विंग मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. वी आर कंजर्विंग द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. क्यों? मुझे कंप्रेशन इन द स्प्रिंग चाहिए, राइट? तो स्प्रिंग को सिस्टम में इंक्लूड करना पड़ेगा, राइट? सो फ्रॉम देयर व्हाट वी आर गेटिंग? मास, ब्लॉक का मास. इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक इज v. v square is equal to half is gone, k into compression square. From there, this is maximum compression. This is the maximum compression. So what is the maximum compression that I am getting? It is equal to m v square by k under root, right? So this is equal to v m by k under root. I hope you have understood how to find the final compression of the spring. You must understand during maximum compression velocity of block should be 0. अगर velocity block की 0 नहीं है, इसका मतलब spring further compress हो सकता था. That is not the maximum compression of the spring. अब सिनारियो को थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं. पहले क्या था? पूरा जो surface था that was super smooth, right? So now imagine this part of the surface. This part of the surface is now rough. Friction is not equal to 0. That means there is some friction, right? So and remaining portion is smooth, right? Now you have to find the maximum compression produced in the spring, right? So situation same है. We have a block moving in velocity v, right? यहाँ से यहाँ तक there is no friction, right? So this block will not lose any velocity till it reaches this point, right? It will have a velocity v जो इसके पास पहले थी. Now you know what is going to happen. जब ये ब्लॉक स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा, राइट? अब इस ब्लॉक के ऊपर दो फोर्सेस लग रही होंगी जिसको अपोज करेंगे इसके मोशन को. एक है स्प्रिंग का फोर्स, दूसरा ब्लॉक के ऊपर लगेगा फ्रिक्शन, राइट? क्योंकि ये जो ग्राउंड का पार्ट है दिस इज नाउ रफ. हाउ टू फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन प्रोड्यूस्ड इन द स्प्रिंग, राइट? इट्स प्रीटी इजी अगेन. लेट्स से ओरिजिनली बिफोर कंप्रेशन द स्प्रिंग वाज लाइक दिस. द स्प्रिंग वाज लाइक दिस, राइट? एंड दिस इज द कंप्रेशन प्रोड्यूस्ड बाय द ब्लॉक, राइट? पहले ऐसा था, अब स्प्रिंग कंप्रेस हो गया, इतना रह गया. सो दिस इज द कंप्रेशन produced in the spring. How to find what is the maximum compression in the spring? In this problem, how many unknowns you have? We have only one known, that is x. So इसको solve करने के लिए we only require one equation. Okay, let's start. Can we use conservation of linear momentum? Answer is no. Why? There is external force friction acting. और also conservation of linear momentum से आपको velocity मिलती, compression नहीं आप ढूंढ सकते. दूसरा, can we use conservation of mechanical energy? Again, answer is no, because there is non-conservative force, that is friction, which will be working on this block. So conservation of mechanical energy भी आप use नहीं कर सकते. So only approach that we are left with is work energy theorem, right? इसका कोई भी कंडीशन नहीं है. You need not worry कि किस कंडीशन के अंदर हम इस वर्क एनर्जी थ्योरम को यूज कर सकते हैं. बट हाँ, छोटा सा एक टिप है कि वर्क एनर्जी थ्योरम ऑब्वियसली हम वहीं पे यूज कर सकते हैं जहां पे आप हर फोर्स जो भी सिस्टम के ऊपर लग रही है आप सबका वर्क कैलकुलेट अगर कर सकते हो, तभी हम वर्क एनर्जी थ्योरम यूज कर सकते हैं. क्योंकि वर्क एनर्जी थ्योरम है क्या? वर्क एनर्जी थ्योरम सेज वर्क डन बाय all the forces on the system, all the forces on your system is equal to change in kinetic energy of the system. Okay, in this question, what is my system? My system is only block. मैं सिर्फ ब्लॉक को सिस्टम मान के चल रहा हूं. स्प्रिंग को इंक्लूड क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर इसको इंक्लूड कर भी लोगे तो भी कोई फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि स्प्रिंग इज अंडर इक्विलिब्रियम. जितना फोर्स इधर से लगेगा उतना ही फोर्स इस साइड से भी लगेगा, यानी कि by the wall, right? Spring is under equilibrium. F net acting on the spring is 0. It is not accelerating, right? So total forces acting on the spring is 0, right? So work done by all the forces on the spring is 0. So that's why I'm not including spring in my question. So in this question, my system is block only, right? So what are the, first of all, forces acting on the block? First force acting on the block would be spring force. राइट? जब आप स्प्रिंग को कंप्रेस करोगे तो स्प्रिंग इज गोइंग टू अपोज यू, दैट इज रीस्टोरिंग फोर्स अकॉर्डिंग टू द हुक्स लॉ, राइट? द नेक्स्ट फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक व्हेन द ब्लॉक विल बी कंप्रेसिंग द स्प्रिंग, दैट विल बी द फ्रिक्शन अपोजिंग द मोशन ऑफ द ब्लॉक, राइट? दिस फ्रिक्शन विल बी kinetic friction. Why it is kinetic friction? The block is slipping on this rough surface. That is equal to mu into n. This is kinetic friction. So it is mu mg in our case.
Now we know forces acting. You have to calculate the work done by all the forces. That is the work done by spring and the work done by the kinetic friction. Now work done कहाँ से? Obviously work done, total work done by these forces. देखो दोनों फोर्सेस, स्प्रिंग फोर्स का पिक्चर में आई जब ब्लॉक जस्ट इसको हिट किया, जब इसको कंप्रेस करना स्टार्ट किया, तब से स्प्रिंग फोर्स इसके ऊपर लग रही है, राइट. फ्रिक्शन कब से लग रहा है? ऑब्वियसली फ्रिक्शन भी यहीं से लग रहा है क्योंकि उससे पहले ये सारा सरफेस था वो स्मूथ था और दिस इज द ओनली सरफेस विच वाज रफ. तो फ्रिक्शन भी जो ब्लॉक के ऊपर लगना स्टार्ट हुआ वो भी इसी पॉइंट के बाद ही लगना स्टार्ट हुआ, राइट. सो बोथ फोर्सेस, फ्रिक्शन एज वेल एज स्प्रिंग फोर्स, दे स्टार्टेड एट दिस पॉइंट, राइट. सो व्हाट इज द वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स? तो यहां से लेके यहां तक जितना उसने कंप्रेस किया, आप यहां से देख रहे हो जितना उसने कंप्रेस किया, स्प्रिंग फोर्स ने कितना वर्क डन किया होगा? वी नो दैट इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर with the negative sign. I hope you know what is why negative. Spring force acting this way, जो displacement हुआ वो यहाँ से इस डायरेक्शन के अंदर हुआ. Displacement was in this direction. So minus half k x square plus what is the work done by this friction force? That is force into displacement. Displacement कितना? Obviously इस पॉइंट से अगर यहाँ तक कंप्रेस हुआ, इसी को आप क्या लेके चलो x. So this displacement is x. And again, is it positive or negative? Again, it is negative because friction is this way and the displacement is this way. So it should also be negative. Equal to kinetic energy में change. किसका kinetic energy में change? System. System कौन है आपका? Block. Final kinetic energy 0. Initial kinetic energy was half m v square. Okay, just you need to solve this and solve for x.